চমৰীয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ হৈ চমৰীয়াৰ বৰুৱা, বালিয়াজাৰ আৰু মালিবাৰীত সহধৰ্মিনী নুৰী আহমেদৰ মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। এইবাৰ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে কামৰূপ জিলাৰ চমৰীয়াৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি দিছপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে সমষ্টিটোত মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ। 2026 বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত চমৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰা ছয়গাঁও সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে উৎসাহিত ইয়াৰ কংগ্ৰেছ মহল। নৱগঠিত 27 নং চমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ হৈ চমৰীয়াৰ কেইবাখনো পিছপৰা তথা বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত দিনজোৰা মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ সহধৰ্মিনী তথা কংগ্ৰেছ দলৰ সৰ্বভাৰতীয় নেত্ৰী মহিলা কংগ্ৰেছ সৰ্বভাৰতীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা নুৰী আহমেদৰ। সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰী নুৰী আহমেদে চমৰীয়াৰ বৰুৱা, বালিজাৰ, মালিবাৰী, ডেকাচাং আদি অঞ্চলত চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। চমৰীয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তাইজুদ্দিন আহমেদৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাতো অংশগ্ৰহণ নুৰী আহমেদৰ। এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী তথা প্ৰাৰ্থী ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ সহধৰ্মিনী নুৰী আহমেদক সৰ্বস্তৰক ৰাইজৰ লগতে কংগ্ৰেছ কৰ্মী, দলীয় নেতৃত্ব আৰু কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীয়ে উষ্ম আদৰণি জনায়। নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযানত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ হাত শক্তিশালী কৰিবলৈ লগতে ভাৰতীয় সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰে নুৰী আহমেদে। डीएनए में कांग्रेस है और वो एक कांग्रेस के कट्टर सिपाही है और 6 गांव की विधानसभा उनके विकास का एक मॉडल है और उसी विकास के मॉडल पर समोरिया की जो नई विधानसभा बनी है उसका विकास होगा। अस्पताल, रास्ते, ब्रिज, बच्चों के स्कूल सब खुलेंगे, हमारी बहनों को न्याय मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ समोरिया विधानसभा का ये जो बुरा काम देख रहे हैं, मुझे मेरे माँ बाप, भाई बहनों ने मुझे और रकीबुद्दीन का आशीर्वाद दिया है और रकीबुद्दीन अहमद साहब इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे। और ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव एक युद्ध है और ये चुनाव एक मोहब्बत की दुकान है। इसमें जिन लोगों ने देश को बांटा है, जो संविधान की बातें करते हैं लेकिन आज समोरिया विधानसभा को बांटना चाहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ समोरिया विधानसभा नहीं बटेगी। समोरिया विधानसभा कांग्रेस के प्रार्थी रकीबुद्दीन अहमद जी को विजयी बनाएगी, जीत दिलाएगी। संविधान को मजबूत बनाने के लिए जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लड़ रही है और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से रकीबुद्दीन अहमद साहब को कांग्रेस पार्टी का सिपाही बनाकर समोरिया विधानसभा के लिए भेजा है, समोरिया का विकास करना ही रकीबुद्दीन अहमद साहब की प्राथमिकता है। मैं उनकी धर्मपत्नी होने के नाते आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि जिस तरीके से इस देश को बांटा जा रहा है, नफरतों में जलाया जा रहा है, उस नफरत और उस जिस तरीके से इस देश को बांटने का काम कर रहा है उसके खिलाफ आगे आइए और समोरिया का जो विकास रकीबुद्दीन अहमद साहब करना चाहते हैं, रास्ते, ब्रिज, दलंग, अस्पताल, स्कूल के माध्यम से आप रकीबुद्दीन अहमद साहब के हाथ को मजबूत करिए। हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम सब परिवार हैं और ये लड़ाई नफरतों के खिलाफ, ये जो लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है, बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने की है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और सभी की दुआएं और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। চমৰীয়াৰ পৰা সাইফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃ টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।